welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों मलाइका अरोरा हुई नाराज एक फैन से? नेटिजन साई पल्लवी की किस बात पर हुए एंग्री? चाचा रियल स्मूथ स्टार कूपर रैफ ने जूम से किया एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट. Malaika Arora gets brutally trolled on social media. Netizens ने किया मलाइका अरोरा को उनके रूड बिहेवियर के लिए क्रिटिसाइज. मलाइका अरोरा के कुछ फैंस ने उन्हें किया फुल सपोर्ट. क्या मलाइका अरोरा को उनके ही एक फैन ने कर दिया इरिटेट? मलाइका अरोरा को आखिर क्यों अपने ही एक फैन के साथ करना पड़ा थोड़ा रूड बिहेव? रिसेंटली गॉर्जियस मलाइका अरोरा को उनकी योगा क्लासेस के लिए रश करते हुए किया गया था स्पॉट. इस वक्त शी वाज लुकिंग चार्मिंग इन अ ब्लैक ब्रालेट विद ब्लू शॉर्ट्स. क्लासेस फिनिश करके जैसे ही मलाइका अरोरा यहाँ से बाहर निकली, तभी उनके एक फैन ने उन्हें देख तुरंत उन्हें फोटो के लिए अप्रोच किया, जिसके बाद मलाइका अरोरा ने उन्हें अपने साथ पिक्चर्स लेने भी दी. लेकिन फिर जैसे ही इस फैन ने दोबारा उनके साथ सेल्फी लेने की डिमांड की, मलाइका अरोरा थोड़ी नाराज नजर आई. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे फैन के दोबारा सेल्फी लेने की रिक्वेस्ट पर मलाइका अरोरा थोड़ी नाराज हो गयी, दो उन्होंने फिर भी अपने फैन को सेल्फी दी. अब जैसे ही मलाइका अरोरा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सरफेस हुआ, नेटिजन्स ने उन्हें अपने फैन के साथ रूड बिहेव करने के लिए क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने कमेंट में लिखा, रूड बिहेवियर विद फैन. Another one said, करवाली बेइज्जती. One of the users asserted, मत लो, काहे को भाव दे रहे हो इतना. A netizen added, मुझे पता नहीं ये लोग इनके पीछे क्यों इतने पागल रहते हैं. हम लोग की तरह आम इंसान तो हैं ये लोग. Another netizen added, I want to know who are the ones who want to take photos with her at first place. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो मलाइका अरोरा के सपोर्ट में दिखे और कमेंट करते हुए एक यूजर ने कहा, अब लोग बोलेंगे कि कितना एटीट्यूड दिखा रही है. अरे यार, वो भी इंसान है, उनको भी बाहर निकलने दो. डोंट डिस्टर्ब हर यार. Another user said, for the people calling her rude, she has a life too. Imagine being run after every day. One of the user also added, full बेशरम है, लेने वाला भी. इसे देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मलाइका अरोरा के ट्रू फैंस हमेशा उन्हें समझते हैं और अपने इन्हीं फैंस को मलाइका अरोरा अपनी एक बुक के जरिए देने जा रही हैं सरप्राइज, जो न्यूट्रिशन पर बेस्ड होगी एंड द वर्क ऑन विच इज करंटली इन प्रोग्रेस. अपनी इस बुक पर बात करते हुए मलाइका अरोरा इन अ स्टेटमेंट सेड, माय गोल हैज ऑलवेज बीन टू फैसिलिटेट आइडियाज अराउंड हेल्थ एंड वेलनेस. The book will help us share our insights with people at large. I personally believe in the comprehensive well-being of our body. Concentrating on just one does not support the other. So the idea is to promote good health inside out, and we have barely scratched the surface as of now. ऐसे में अब जो भी मलाइका अरोरा की तरह हेल्थी ईटिंग हैबिट्स को अपना कर फिट और हॉट दिखना चाहते हैं, उनके लिए ये बुक वाकई किसी गिफ्ट से कम नहीं होने वाली है. जानवी कपूर को सोशल मीडिया ट्रोलिंग ने बना दिया इंडिफरेंट. जानवी कपूर ट्रोलर्स से अपनी यूनिक स्टाइल में करती हैं डील. जब बवाल एक्ट्रेस जानवी कपूर ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब. जानवी कपूर अक्सर अपने बोल्ड एंड सेक्सी अंदाज से इंटरनेट पर बवाल मचाती रहती हैं. जानवी कपूर की ये हॉट अदाएं उनके एडमायरर्स को बेहद पसंद भी आती हैं, जिसे सोशल मीडिया के उनके पोस्ट्स पर साफ देखा जा सकता है. ऐसे में अपने फैंस के इसी प्यार और पॉजिटिविटी के चलते जानवी कपूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुपर एक्टिव हैं और अपनी लाइफ के हर छोटे बड़े इवेंट्स को उनके साथ शेयर करती हैं.
लेकिन विद सोशल मीडिया अप्रिसिएशन ऑल्सो कम्स ट्रोलिंग, जिसे हर स्टार को झेलना पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू आर अ स्टार किड। हालांकि जानवी कपूर इस तरह के ट्रोल्स और नेगेटिविटी से डील करने में एक्सपर्ट है और इस पर ओपन अप होते हुए शी हैड सेड दैट शी हैज बिकम indifferent to it. In an interview, Janhvi Kapoor had said, "I have become increasingly indifferent to it. But time and again, I think I'm always a little surprised and taken aback by just the double standards sometimes and how bitter some people can be. But then again, it's not a big deal." ऐसे में जानवी कपूर ने अपने यूनिक स्टाइल में इंटरनेट ट्रोल्स को जवाब देते हुए अपनी कुछ पिक्चर्स शेयर की थी फ्रॉम हर रीसेंट फोटोशूट एंड मेंशन्ड दैट पीपल आस्क्ड हर टू रिफ्लेक्ट एंड शी इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम इन अ सुपर शाइनी लॉन्ग गाउन। वैसे जानवी कपूर का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है जिसमें ट्रांसपेरेंट ब्लू स्कर्ट और ब्रालेट टॉप में एक फोटोशूट के लिए वो रेडी हो रही हैं। जानवी कपूर के फैंस उनके इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं। इसी बीच एक इंटरव्यू में when Janhvi Kapoor was asked if it is true that she was named after Urmila Matondkar's character in Jadai, replying to the question, the Dhadak actress had said, "No, I was not named after Urmila's character in Jadai. I think Dad just really liked the name from before the film and Mom did too. I think Mom was really obsessed with the idea that the meaning of it was purity and she would keep looking at me and keep telling me that I look pure and pure soul and things like that. So, I feel it really resonated with her in that sense." दूसरी तरफ जानवी कपूर के वर्क फ्रंट की बात करें तो जानवी कपूर इज शूटिंग फॉर हर अपकमिंग फिल्म बवाल विद वरुण धवन। इसके अलावा शी विल बी सीन नेक्स्ट इन गुड लक जेरी। She will also reunite with Rajkumar Rao after Ruhi for Mr. and Mrs. Mahi. She will then star in Nilly opposite Sunny Kaushal, a remake of the Malayalam film Helen. वरुण धवन नॉर्थ और साउथ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर हो रहे डिबेट पर क्या सोचते हैं? वरुण धवन says South films have flopped too. वरुण धवन ने हिंदी फिल्म्स के फ्लॉप होने पर दिया जवाब। कियारा आडवाणी भी करती हैं वरुण धवन की बातों से अग्री। बॉलीवुड इंडस्ट्री और साउथ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर शुरू हुए डिबेट में वरुण धवन ने रखा अपना साइड। वरुण धवन ने कहा साउथ की फिल्में भी हुई हैं फ्लॉप। वेल, KGF चैप्टर 2, पुष्पा द राइज और RRR के ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद से ही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई है। इस पर दोनों इंडस्ट्रीज की तरफ से कई पॉपुलर फेसेस अपना टेक रख चुके हैं। रिसेंटली एक मीडिया इंटरैक्शन के दौरान वरुण धवन से भी इस पर उनके थॉट्स पूछे गए, जिसका जवाब देते हुए वरुण धवन सेड, "Cinema is doing well right now. The audience has the right to watch the cinema they want to watch. Hollywood films have been working for so many years. It is because they are liking it and therefore they are watching it. I myself enjoyed watching KGF 2. I had a great time watching it. It is one of the biggest grossers right now." इसी interaction में when the actor was asked about Hindi movies that flopped in the recent past, Varun Dhawan added, 7-8 major flops have happened in their cinema also. That has also happened because nothing was released in the last 2.5 years. I feel a good film will come. In the Hindi film industry, we have a lot of good films coming up. Every film can't be a hit. The audience won't watch a bad film, whether it is in English, Hindi or a South film. They will not watch. वैसे वरुण धवन का ये भी मानना है कि इंडस्ट्री में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की सक्सेस की गारंटी देता हो। वरुण धवन said, "Kiara is a keen follower. Nobody knows. Let's just say it today on camera. Nobody knows. Nobody knows anything. Let's be honest. I don't think the trade knows anything. I don't know that even the most successful producers know or directors. There's nothing. Nobody knows anything." वरुण धवन की जुग जुग जियो को स्टार कियारा आडवाणी भी उनकी इस बात से अग्री करती दिखी। कियारा आडवाणी said, "What are these trends? There are no trends. Nobody knows what's working. No one knows. There's no formula to this." बता दें वरुण धवन और कियारा आडवाणी इन दिनों हर तरफ अपनी अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं जो जून 24 को रिलीज होगी एंड इज touted as a family entertainer that has everything, emotions, laughs and so much more.
And at the center of all of that are marriages. ऐसे में जब वरुण धवन से पूछा गया कि what does he think is the most important thing when it comes to marriage, he said, I feel friendship is important in a marriage. I feel before you get married, you should know each other very well. You should know all the things that could cause a problem later on in a marriage. You don't want to discover new things, which you will, of course. People evolve. But you should know each other's secrets. You don't want things to suddenly come up. यानी कह सकते हैं कि वरुण धवन और नताशा दलाल की सक्सेसफुल मैरिज का भी यही सक्सेस मंत्र है. I'm going to sell out for sure. No, I You're don't. going to sell out for sure. It's not. I think people think that I'm being asked to shoot all of these new Marvel movies, but I'm definitely not. And I don't think I would say yes even if I was asked. So no, I'm hoping not. No. I'm hoping. I don't think you're going to be a sellout. No, yes. No. No? Never. Really? Never gonna sell out. Honestly, Dakota can flirt with a wall. And so it wasn't very hard to feel. Yes, she's very, it's very easy with her in a scene to feel like there's electricity. I made a movie called Shithouse because this amazing filmmaker named J. Duplass saw a really small homemade movie that I made. And it was the beginnings of Shithouse. And he's was my mentor, producer, best friend, dad, surrogate father person. And then he helped me make Shithouse. Hello, everyone. I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. My guest today is super talented. And I must say, I feel like the universe has sort of conspired for him to be exactly where he is. And I'll explain that why I'm talking about Cooper Raiff. Congratulations, Cooper. Thank you so much. I think, it's a great film. Do you want to go ahead and explain why I said the universe has conspired you to be exactly where you are? Yes. Do you mean like how I came to make the movie or what the movie's about? Yeah, exactly. I was thinking when the first thing, how I got the break. How you sort of made Shithouse and J. Duplass and everything. Yes, I made a movie called Shithouse because this amazing filmmaker named J. Duplass saw a really small homemade movie that I made. And it was the beginnings of Shithouse. And he's was my mentor, producer, best friend, dad, surrogate father person. And then he helped me make Shithouse. And then after that, I made Cha-Cha because I met this person named Ro Donnelly, who ultimately produced that movie. And I've been very, very lucky. It's so good to see the kind of chemistry that Dakota and you share on screen. It's so natural. And also, of course, the storyline that goes between the two characters is wonderful. It's sort of complex, it's heartbreaking in its own way. Explain to me how it was for you on screen and when you're describing how this sort of dynamic will play out. When Dakota and I first met, we had like a fun chemistry that I think felt like the dynamic of Andrew and Domino. And she just, honestly, Dakota can flirt with a wall. And so it wasn't very hard to feel. Yes, she's very, it's very easy with her in a scene to feel like there's electricity. It's wonderful that the casting of Vanessa just seems so seamless, and everybody was convinced that it has to be you, and you particularly. You said it reminded you of your sister. What did your sister think of it? I'd like to know that, and what did Vanessa at the end think of it? Because I know her opinions were so important for you at the making of the film. They were really important. I really wanted Vanessa to love the movie, and I knew that she would tell me if she didn't, because she's very honest. And we saw it for the first time together. I could tell that she said she really liked it, and I could tell she really meant it. And my sister, I think she loves the movie too. When can you tell me, Cooper? You've started on this route where you just want to make your kind of films, and you're not like corrupted by or seduced by the whole magnanimity of commercial world yet. Is this the route that you think you're going to go by for the next 5 years? I'm going to sell out for sure. No, I You're don't. Going to sell out for sure. It's not. I think people think that I'm being asked to shoot all of these new Marvel movies, but I'm definitely not. And I don't think I would say yes even if I was asked. So no, I'm hoping not. No. I'm hoping. I don't think you're going to be a sellout. No, yes. No? Never. Really? Never gonna sell out.
It's wonderful. Thank you, Cooper. It's lovely chatting with you. Thank you so sending much. you lots of love from India. Thank you. Come visit us. Yes, I need Send you to. love like this. Thanks for talking with me. Same here. Thank you, Cooper. Bye. Coming up on the show, किस B-Town celeb ने create किया buzz on social media? साई पल्लवी ने किया एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स और काउ विजिलेंटिज्म को कंपेयर। साई पल्लवी के स्टेटमेंट से सोशल मीडिया यूजर्स हुए खफा। साई पल्लवी कर रही हैं अपनी अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस साई पल्लवी के एक स्टेटमेंट पर शुरू हो गई कंट्रोवर्सी। साई पल्लवी को एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स को काउ विजिलेंटिज्म के साथ कंपेयर करना पड़ गया भारी। दरअसल एक्ट्रेस साई पल्लवी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म वितारा पर्वम का प्रमोशन कर रही हैं और इसी फिल्म के लिए एक यूट्यूब चैनल को दे रहे अपने प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कश्मीरी पंडित्स को लेकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी। Sai Pallavi said, "The Kashmir files showed how Kashmiri Pandits were killed at the time. If you are taking the issue as a religious conflict, a recent incident happened where a Muslim driver who was transporting cows was beaten up and forced to chant Jai Shri Ram. So where's the difference between these two incidents?" साई पल्लवी के इस बयान को सोशल मीडिया पर जहां कुछ ट्विटर यूजर्स ने सपोर्ट किया है, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो उनके अगेंस्ट हो गए हैं और सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए लिखा, "I liked #Sai Pallavi, not anymore. I have never complained about her pimple-filled cheeks, ugly shaped, bad hairstyles, but going forward I will hate her. As she tells, killing a cow smuggler and killing Kashmiri Pandits are same. She might say killing terrorist and KP is same." एक और यूजर ने लिखा, "In spite of being subject to mass killings and exodus, Kashmiri Pandits never played the victim card. That's why Sai Pallavi cannot differentiate between the unfortunate killing of one man and the catastrophic genocide of an entire community." Third user commented, "Dear @Sai Pallavi 92. There is a huge difference in a random Muslim being beaten and an entire community being uprooted. Please don't trivialize my pain. Come and see any of our broken homes and hearts. We are witnesses to genocide, but await justice. Not everything is propaganda." इसी बीच साई पल्लवी के कुछ फैंस ने उनकी हिम्मत को सपोर्ट किया है, ये कहते हुए कि "Kudos to Sai Pallavi for speaking up the truth." बता दें, अपने इसी इंटरव्यू में साई पल्लवी ने ये भी कहा कि वो एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट में बड़ी हुई हैं। उन्होंने लेफ्ट और राइट विंग के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन कौन सही है और कौन गलत, इस बारे में वो कुछ नहीं कह सकती। मूविंग ऑन टू हर फिल्म विराटा पर्वम, इस फिल्म में साई पल्लवी के साथ राणा दागुबाती है, जिसे वेनु उडुगुला ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म 17 जून को रिलीज होगी। केटी में देखा? मुझे देखा कार्तिक आर्यन का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने पेट डॉग के साथ बड़े ही क्यूटली स्ट्रीट किड्स के साथ चिट चैट करते नजर आ रहे हैं। मजा आया पिक्चर देख के? छोटी टांकी में डाल दे, आप बड़ी टांकी में। अरे बाप रे, अरे नहीं, सब अच्छी टांकी है। ये वाला भी अभी आया। सिद्धू मूसेवाला की डिमाइस को अब कुछ दिन बीत चुके हैं, लेकिन फैंस के साथ साथ उनकी फैमिली के लिए भी उन्हें भूल पाना बेहद मुश्किल है और रिसेंटली लेट सिंगर को याद करते हुए गिप्पी ग्रेवाल के किड्स अपने चाचा जी को ट्रिब्यूट देते नजर आए। नव्या नवेली नंदा इन दिनों जापान में छुट्टियां बिता रही हैं और इसकी लेटेस्ट पिक्चर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर करते हुए कैप्शन दिया, "Just me and my dad exploring the world together." इस पिक्चर में नव्या नवेली नंदा अपने डैड के साथ दिखाई दे रही हैं। जैसे ही ये पोस्ट नव्या नवेली नंदा ने शेयर किया, इस पर निखिल नंदा की आंट नीतू कपूर ने रिएक्ट करते हुए कहा, "Too adorable both of you."
रिसेंटली ही रणबीर कपूर आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर सामने आया है, जिसे रिलीज के तुरंत बाद ही लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन अब #Boycott Brahmastra सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। Some Twitterati urged masses to boycott the film. The team of the movie is facing backlash as they showed Ranbir Kapoor wearing shoes and entering a temple. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मोनी रॉय भी पिवटल रोल्स में हैं। अनिल कपूर जल्द ही ग्रैंडफादर बनने वाले हैं और जिसे लेकर वो बेहद एक्साइटेड हैं। ऐसे में एक रीसेंट इंटरैक्शन के दौरान जब अनिल कपूर से पूछा गया कि व्हाट काइंड ऑफ अ मदर सोनम कपूर वुड बी, तो जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते सोनम कपूर एक ओवर प्रोटेक्टिव मॉम बने। द वर्सेटाइल एक्टर सेड, "These days moms are a little overprotective. When I overhear things from my wife, I feel you should not be too protective."